Good morning to all of you. So we have discussed Mendeleev's periodic table, and we have seen that Mendeleev's periodic table, in spite of having many advantages, suffered from certain drawback. यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी अच्छाइयाँ होने के बाद भी उसमें कुछ कमियां थी, कुछ दोष थे, कुछ ड्रॉबैक थे, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दोज ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. इट वाज हेनरी मोज़ले who gave the concept of atomic number. Atomic number is the number of protons present in the nucleus of an atom. Number of protons present in the nucleus of an atom is called its atomic number. For example, oxygen atom has 8 protons in its nucleus, so its atomic number is 8. Now, an atom is electrically neutral. Protons are positively charged and electrons are negatively charged. An atom could be neutral, electrically neutral, only when it has an equal number of electrons and protons. So, atomic number is also equal to number of electrons present in a neutral atom. Now, we have already learned in the previous lessons that in chemical bonding, only electrons take part. In other words, it is the number of electron or it is the atomic number which determines the chemical properties of an element. किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक मास नहीं, उसके एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है. So it was Henry Moseley who showed that the properties of an element are determined by its atomic number. So Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of classification of element. The modified periodic law states that chemical properties of elements are periodic function of their atomic number, not atomic mass, atomic number. What does it mean? If the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers, elements with similar properties are repeated after regular interval of time. तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई किया गया, उसको बदला गया, और जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो एटॉमिक मास को हटा करके एटॉमिक नंबर लिया गया. अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इस क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. इट मींस if the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers, elements with similar properties are repeated at regular interval. So this is
modern periodic law. Now let us arrange these elements, 20 elements, first 20 elements, in the increasing order of their atomic numbers, and let's see what happens. Hydrogen with atomic number 1. Then we have helium, atomic number 2. Electronic configuration of hydrogen 1. It has only one shell, and that is the first shell, and it has one electron. Helium also has only one shell, and it has 2 electrons in that shell, and it is completely filled. Now when we will proceed towards lithium, as the first shell is completely filled, a new shell will begin to form, and therefore in the next element there will be 2 shells. First shell containing 2 electrons and second shell containing 1 electron. See, lithium with atomic number 3, it has 2 shells. First shell has 2 electrons, second shell has 1 electron. The next element after lithium is beryllium. Its atomic number is 4 and its electronic configuration is 2, 2. Next element after beryllium is boron. Its electronic configuration is 2, 3. Then we have carbon, 2, 4. Nitrogen, 2, 5. Oxygen, 2, 6. Fluorine, 2, 7. And finally we have neon, 2, 8. Now as we reach neon, noble gas, the second shell is also completely filled because it is the last shell, and last shell cannot accommodate more than 8 electrons. Obviously, in the next element, the third shell will begin to form. Let's see. Next element is sodium with atomic number 11, and its electronic configuration is 2, 8, 1. Next element after sodium is magnesium. Atomic number 12, electronic configuration 282. Next element aluminium. Electronic configuration 283. Then we have silicon. Atomic number 284. Then we have phosphorus 285. Then we have sulfur 286. Chlorine 287. So this is magnesium, aluminium, silicon. This is silicon, this is phosphorus. Then we have sulfur, chlorine, and finally we reach to a noble gas argon with electronic configuration 288. So we see that as we reach to the noble gas argon, the third shell is also completely filled because it is last shell, and last shell cannot accommodate more than 8 electrons. Obviously, in the next element, a new shell will begin to form, and that element is potassium with electronic configuration 2881. Then we have calcium 2882. Sir. Yes. Alpha fill कर लो. So what you see here? When the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers, element with similar electronic configuration fall in the same vertical column.
you can see. So all the elements in the vertical column, that is the group, have similar electronic configuration and therefore they have identical chemical properties, because it is the electronic configuration which determines the chemical properties of elements. So when elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers, elements with similar electronic configuration are repeated after regular interval, and therefore the periodicity of the element, properties of the element, is the cause of the repetition of element with similar electronic configuration after regular intervals. हिंदी में समझ लो इस बात को, जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर्स के अरेंज करते हैं तो आप देखते हैं कि एलिमेंट्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक से होते हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और पोटेशियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर है। अब क्योंकि एक रेगुलर इंटरवल के बाद ऐसे एलिमेंट आते हैं जिनका सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है, तो आप कह सकते हो कि जो पीरियोडिसिटी है प्रॉपर्टी की, उसका बेसिक कारण है कि जो एलिमेंट जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर होते हैं वो रिपीट होते हैं एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम या रेगुलर इंटरवल में। यही कारण है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट करता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इट मीन्स इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज fall या repeated after regular interval. So this is the basis of classification in the modern periodic table, which is also known as long form of periodic table, extended form of periodic table, modern periodic table, and also known as Bohr's periodic table. तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसको कई नामों से जाना जाता है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या बोर्ड्स पीरियोडिक टेबल, उसमें जो एलिमेंट्स हैं दे हैव बीन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. नाउ व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, all the drawbacks, all the shortcomings that suffered by Mendeleev's periodic table are vanished. वो सारी कमियां, वो सारे दोष जो मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में थे, जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के आधार पर क्लासिफाई करते हैं, वो सारी कमियां, वो सारे दोष वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और आपको एक बहुत ही प्रिसाइज ऐसी टेबल मिलती है which does not have drawbacks. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल the elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers such that elements with similar electronic configuration and hence elements with similar properties fall in the same vertical columns called group. एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर्स के इस तरह से कि जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल हो, वो एक ही वर्टिकल ग्रुप में आए, एक वर्टिकल कॉलम में आए, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल.